नमस्कार। आप सबसे विनम्र निवेदन है कि आप सब अपना अपना स्थान ग्रहण कर लें। वी आर जस्ट अबाउट टू कमेंस, सो एवरीवन प्लीज रिक्वेस्टेड टू टेक देयर सीट्स। थैंक यू। नमस्कार। हेलो एवरीवन। आप सबसे विनम्र निवेदन है कि आप सब अपना अपना स्थान ग्रहण कर लें। ऐसे यूजुअली इंडियंस को सब कहते हैं कि समय से चालू नहीं करते, पर आज हम घड़ी के कांटे से चालू कर रहे हैं। एक दरख्वास्त है आप सबसे कि अपने अपने फ़ोन्स प्लीज़ साइलेंट पे रख दीजिए। To keep the respect for the evening, I request everyone to please keep their phone on either vibrate mode or silent mode, please. आज जो इवेंट के लिए हम लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं, उसका हम पूरी तरह से लुफ्त उठा सकें और बेनिफिट कर सकें, इसलिए जस्ट फॉर 30 seconds can we just observe an inner silence in remembrance of the dear Netaji that we've all gathered here for. So just 30 seconds of inner silence for him. थैंक यू एवरीवन। तो शुरुआत करते हैं आज की एक ये जो अनोखी हमारी मीट है। थोड़ा हिंदी थोड़ा इंग्लिश, आजकल इंग्लिश चलता है, तो आई होप आप सब माइंड नहीं करेंगे। मैं नीलू, मैं आज आपकी एमसी हूँ, तो थोड़ा सा आपको मुझे बर्दाश्त करना पड़ेगा 2-2.5 घंटा। आप सब बहुत मान्यगण हैं यहाँ पर, मुझसे बहुत ज़्यादा अनुभवी, तो अगर मुझसे थोड़ी सी भी कोई भूल चूक हो जाए तो मैं पहले ही आप सबसे माफ़ी मांगती हूँ। कोशिश तो करूँगी कि ना हो, फिर भी हो जाए तो यकीन है मुझे कि आप सब माफ़ कर देंगे। चालू करते हैं। ये जो हमारी मीट है, ये जैसे कि हमारा मिशन नेताजी एंड INA थाईलैंड का प्रोजेक्ट है। इट्स अ हाइब्रिड प्रोजेक्ट। इट इज़ इन अलायंस विथ इतिहास संकलन समिति और हम स्वदेशी दिल्ली, न्यू दिल्ली, इन सब ने मिलकर एक वर्षीय सेलिब्रेशन डिसाइड करा कि करेंगे
for celebrating 80th year of Netaji's visit to Thailand. यकीन मानिए, ये मैंने भी रवि भैया से पहली बार ही सुना। इतनी इतिहास की किताबें पढ़ी होंगी, लेकिन कुछ भी याद नहीं है। तो जो थोड़ा बहुत अभी बोल भी रही हूँ, वो सिर्फ उनसे पता लगा है, इसलिए बोल रही हूँ। तो हमको काफ़ी बच्चों को जो इंडिया में पले बड़े हैं, उनको भी इस बात का कोई इल्म नहीं था कि ऐसा भी कुछ कभी हुआ था इतिहास में। तो बहुत ही अनोखा किस्म का एक्सपीरियंस मैं भी यहाँ ले रही हूँ अभी आप सबके साथ में। हर ओकेजन हम जब चालू करते हैं तो एक बहुत ही प्यारा सा ट्रेडिशन है, वी लाइट द लैम्प। शायद हमने कभी सोचा नहीं कि हम क्यों करते हैं, तो एक परंपरा अनुसार चला आता है तो हम करते रहते हैं, but it just signifies something deeper than just lighting the lamp, and that is we actually light the awareness। हम अपनी खुद की चेतना को जागृत रखेंगे, सिर्फ इसी प्रोग्राम के वक्त नहीं पर उसके बाद में भी। इसलिए मैं विनम्र निवेदन करूंगी, अभी जो मैं नाम लूंगी मैं उनसे विनम्र निवेदन करती हूं कि वो आएं और प्रज्वलित करें लैंप को। लिस्ट थोड़ी सी लंबी है तो थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा मेरे साथ। सबसे पहले मिस्टर अश्विन कोटनिस जी, who's representing Embassy of India, Thailand. He's a counselor. Shri Sudarshan Pal Singh ji, he's the eldest son of Shri Ishar Singh Narula, Minister Azad Hind Government, Chairman, Indian Independence League in Thailand. Shri Seetal Tiwari ji, lone living veteran in Thailand who's representing INA. I think he deserves a huge, huge applause. Shri Raj Sadchdev ji, he is a member of Bal Sena in Bangkok. Shri Gurumukh Singh ji, patron of IAT. Shri Tilak Raj Pawa ji. Sarabjit. Can I request everyone to please stand? आप सबसे विनम्र निवेदन है कि आप अपने स्थान पर खड़े रहें इस गीत के लिए।
ज्वाला तो प्रज्वलित कर ली, अब फूलों से भी स्वागत कर लेते हैं। तो मैं रिक्वेस्ट करती हूँ मिस्टर सरबजीत सिंह जी, वो बुके प्रेजेंट करेंगे मिस्टर अश्विन कोटनिस, काउंसलर, एम्बेसी ऑफ इंडिया को। May I please request Mr. सरबजीत सिंह जी, थोड़ा तालियों के साथ भी स्वागत हो जाए। अब मैं रिक्वेस्ट करूंगी श्री रवि सहगल जी से, वो बुके प्रेजेंट करेंगे मिस्टर हिमांशु गुलाटी, इज एमपी फ्रॉम नॉर्वे, आवर चीफ गेस्ट फॉर टुडे। थोड़ी सी और तालियां। योगा वालों से मैंने ऐसा सुना है कि तालियां बजाते हैं तो बहुत खुशी मिलती है। Shri Gurumukh Singh ji to present a bouquet to Dr. Tamil Selvan. आवाज नहीं आ रही है? अब मैं दरख्वास्त करती हूँ श्री सरबजीत सिंह जी से, सर आपको बैठने नहीं दूंगी आज कि आप आकर अतिथिगण का वेलकम करें अपनी स्पीच से। Sat Sri Akal ji. Ladies, gentlemen and friends, on behalf of the Indian Association of Thailand, it gives me great pleasure to welcome our chief guest, Mr. Ashwin Kotenis, who is the Consular of the Embassy of India to Thailand and is representing Her Excellency Srimati Suchitra Durai, the Ambassador of India to the Royal Kingdom of Thailand, to our function today to celebrate the 80th anniversary of the first visit to Thailand of Netaji Subhash Chandra Bose. We are celebrating this visit for 1 year from July 2022 to July 2023. And today is the first of such events, and we are pleased that we have a distinguished guest of honor, Dr. Professor Tamil Selvan. Please give him a. Of Bharatiya Itihas Sankalan Samiti, Assam, who have flown in specially for today's function. I would also like to welcome our chief patron and founder of the Indian Association of Thailand, Mr. Gurmukh Singh Sajdev, and past president and chairman of the organizing committee, Mr. Ra Sajdev. We would like to thank
to the Government of India for entrusting this event to the Indian Association of Thailand to commemorate the 80-year celebration of Netaji's historic first visit to Thailand. The Indian community will forever be indebted to the then His Majesty King Ananta Mahidol and then the Prime Minister General Paul Pibun Songkram, who fully supported the freedom movement of India and allowed Netaji to establish a training center of the Azad Hind Fauj, also providing 1 hour on radio to contact his supporters in India, and provided a full floor at the Royal Hotel for his use as his headquarters, office, and other routine matters. The prime objective of the Netaji mission to Thailand is to highlight his presence in Thailand, the establishment of the Azad Hind Fauj, and the roles and sacrifices of the Indian community in Thailand to the Free India movement. We also intended to build suitable memorials at Chonburi, where Netaji established his training center, and at Kanchanaburi, where Netaji built a bridge to connect with India through Burma, using 300,000 Indians, laborers, of whom 90,000 lost their lives during the World War II. As I said at the start, we are celebrating this historic visit for 1 year, and today on behalf of Indian Association of Thailand, I hereby celebrate the beginning of the events to mark Netaji's mission to Thailand 2022 and 2023. Jai Hind. थैंक यू सो मच सर। आगे बढ़ते हैं। हम में से कईयों ने ये गीत स्कूल के बाद तो शायद सुना भी नहीं होगा, तो अभी आप सब अपना ध्यान स्क्रीन पर ले जाइए और एक बहुत प्यारा गीत बजेगा, कदम कदम बढ़ाए जा। सब बैठकर ही सुन सकते हैं ये गीत।
स्कूल के दिनों की याद आ गई। तो आगे बढ़ते हैं। जब जब नेताजी साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज में ट्रैवल करते थे तो उनके स्वागत में एक गीत गाया जाता था, नेताजी नेताजी। मैंने तो कभी नहीं सुना है ये गीत, आज मैं भी पहली बार सुनूंगी। हम में से शायद कईयों ने नहीं सुना है। तो जो ये गीत गाने आएंगे अभी, वो कोई नया चेहरा नहीं है, आप सबका बहुत देखा हुआ चेहरा होगा। बहुत ही टैलेंटेड सिंगर हैं यहाँ की, बहुत डेडिकेटेड हैं, म्यूजिक ग्रेजुएट हैं इंडिया से। शहद घोल देती हैं, पूरा माहौल बना देती हैं। वेलकम करेंगे देबश्री पावा का, वो आकर नेताजी नेताजी गीत गाएंगी। बहुत प्यारी आवाज है, थोड़ा सा और जोर से तालियों से करेंगे स्वागत। शहद घोल देंगी माहौल में। आप सब आंख बंद करके सुनेंगे तो आपको लगेगा कि लता मंगेशकर जी गा रही हैं। Can I sit? Thank you, Debashi. I want to thank the Indian Association of Thailand for giving me this wonderful opportunity to sing, and special thanks to Renuji and Papniji. It's an honor to always present something for IAT.
Jai Hind. इंडियन एम्बेसी के सारे फंक्शन से लेके तो इंडियन कल्चरल एसोसिएशन से लेके तो गणेश उत्सव से लेके हर चीज़ में जब तक देवुषी का गाना नहीं होता है वो पूरा ही नहीं होता जैसे। थैंक यू देवुषी, आपने बहुत सुंदर गाया। आगे बढ़ते हैं। आज इतने सारे राज खुल रहे हैं, मैं जिनको इतने सालों से जानती हूँ उनके बारे में भी कुछ राज आज ही खुल रहे हैं पहली बार। तो अभी जो आगे है वो एक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन है। 25 जुलाई 1943, मैं तो पैदा भी नहीं हुई थी तब, नेताजी यहाँ पधारे थे और वो ऑन द वे टू बर्मा फ्रॉम सिंगापुर जब यहाँ आए थे तो कुछ इम्पोर्टेंट इवेंट्स, उनकी हाइलाइट्स जो हैं अभी हमारे सामने प्रेजेंट करेंगे श्री रवि भाटिया जी। मेरे बड़े भाई से भी बढ़कर हैं, पर अब तक ये राज मुझे भी नहीं पता था that he is the grandson of Shri Lal Singh Ji Pandey, the Vice President of Indian Independence League, Thailand. So he will throw some lights on the facts about that trip. Namaste, Sat Sri Akal, Swadee Khap, and good evening. I think I'll give a multilingual speech for the benefit of the multilingual audience that is sitting in front of us. If you don't mind, I think I'll take that liberty and make that decision for all of you. So what we are trying, this occasion, as you know, is the 80th anniversary of Netaji Subhash Chandra Bose's first official visit to Thailand. So, by the way, I forgot to mention, my name is Ravi Bhatia, and I'll just move you through the movements of what did Netaji do, what did Subhash Chandra Bose do when he came to Thailand on that first visit. It's a 3-day visit, starting from the 25th of July till the 28th of July. And what we'll do is we'll relive those moments. And I have some slides to help you understand what exactly happened. These are some historical photographs that you'll be looking at. And there are family members who are sitting here who are associated with the family, myself being one of them. My family is also sitting, and there are many people sitting. Tilak uncle is sitting, Raj uncle is here as well, and you too. So let's just relive those photographs once again. Let me just come in front because I can't see the slides from there. Is it too bright? Better? Okay. So this is the first day. On the 25th of July, what did he do? That is the day that he landed at Don Mueang Airport. All of us know Suvarnabhumi just came up. This used to be the main airport for us. And he came here on a Japanese aircraft, provided aircraft. Before that, he was in many other places. I won't go into long history because the current scope of focus of today's presentation, today's event, is only on that 80th visit. So he was received there by Pandit Raghunath Sharma, who was the founder of Dev Mandir and the territorial secretary of INA, and Sri Devnathji, who was the general secretary of IIL. IIL is Indian Independence League, for people who are not aware of that. That was the precursor to what ultimately became Azad Hind Fauj. A lot of Thai Indians who are involved with the freedom struggle movement are actually part of IIL, which later became INA.
All right, moving on. Slide ต่อไปครับ So at the airport itself, he was given a guard of honor by the Thai military, which is actually a real official visit, which is happening. A lot of respect being given to Netaji, which is very good. Slide ต่อไปครับ Once he exits from the airport, the local IIL representatives were there along with other Indians to welcome him. And they were led by Sardar Ishar Singh Narulaji, the grandfather of Sudarshan Pal Singh Ji, who's sitting here with us. Oh, your father, I'm sorry. When he left the airport, he left in a car, official car, actually provided by the Thai government, which is very significant. It means that the Thai government had already recognized Netaji Subhash Chandra Bose at that time. Yes, moving on. The first stop that he made is to Victory Monument. Victory Monument in Thai, as we all know, is Anusavari Chai Somorapum. Now, I'm not an expert in languages, but I think this actually, this monument is extremely important. In English, it's just Victory Monument, but actually in Thai, if you relate this to Hindi, it's actually Shaurya Vijay Ki Smaran Bhumi. Smaran Bhumi, once you get that, it just gives a lot more importance. It's not just a building, not just a monument, it's a memorial, which this place is. And he stopped there to give, to pay respects to the Thai fallen soldiers. So this is a direct link between the Indian Army, Indian National Army, and the Thai government. He laid a wreath there to respect the soldiers, and he was accompanied with the gentleman who picked him up from the airport, which is Pandit Raghunath Sharma and Sri Devnath Ji. And a lot of Indians, if you see in the photograph in the background, there were a lot of Indians lined there to pay respect to him, to get a glimpse of him, because he was such a superstar by that time. Okay, next, please. After laying the wreath, the INA soldiers actually gave a guard of honor to Netaji to respect him. And Pandit Raghunath Sharma Ji introduced INA officers to Netaji. I believe that's your father there in the photograph. Okay. Next, please. From the Victory Monument, he was taken in that same official car to the government house in order to meet with the Thai authorities, Thai government authorities. And along the way, as you can see in this particular photograph, there's a guard, there's a convoy. It's not just one car. We're talking about a convoy here. And they're all people standing there cheering him. Who can tell that this is not in India? This is Thailand. And it just looks as if it's a superstar, Indian superstar on the ground here, and people are cheering for him. So once he reaches the Thai government office, he's received by a representative of the Thai government. Now, unfortunately, the prime minister at that time was outside of Bangkok, so he had assigned somebody to receive him in his stead. So, and going forward, the welcome which was given to him was an official welcome with a traditional Buddhist and Thai dance, which, as you can see, he's doing a very nice Y to the dancers who welcomed him. And that same day, after this government house visit, Netaji actually visited the missions of Japan, Germany, and Italy. And I've mentioned this before in my earlier
speeches or presentations that there's a lot of negative vibes coming, that why was Netaji so close to the axis? And I've stated before, it was a relationship, a friendship of convenience and not a friendship of ideology. दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है, इसलिए ये दोस्ती हुई थी जर्मनी के साथ, इसलिए नहीं कि हिटलर से बहुत लगाव था या बहुत प्रेम था। गलत, ये इस बात पे तो हम सारी रात बात कर सकते हैं, लेकिन आज का जो फोकस वो फिर रात बीत जाएगी और सबको हम बोर नहीं करना चाहते। लेकिन ये एक बार हम शुरू हो गए तो we can just continue, keep on going on this, but let's just focus on this day one, the first visit first. So day two, on the 26th of July, what does he do at that time? He met the local Indians. Now that the formalities are over of meeting up with the Thai government and Thai people, he meets the local Indians, us, हमारे जो पूर्वज थे, उनसे मिले थे ये meeting हुई थी Royal Hotel, which is a very historic hotel in Sanam Duang. A lot of people would be aware of where this is, and that's where the meeting took place. And from there, it's during this meeting that Shri Baidyanath Tiwari ji, the father of Sheetal Tiwari ji sitting here, they went to see him and offered his land, his cows, and his children. said, मैं आपको सब समर्पित करता हूँ। वो इस मीटिंग में हुआ था और यहीं से और इसी के बाद नेताजी सीधा उस होटल से छोनबुरी गए थे, जहां इनके पिताजी ने वो जमीन दिखाई थी जाके। वो अब उसकी फोटोग्राफ अब देखेंगे। नेक्स्ट प्लीज। ये थी वो जमीन। And this, as you can see, is the headquarters of Indian Independence League, IIL. This is where a lot of activities were taking place. And Netaji asked for a knife, cut plants, and did Jai Mata Di, and ordered that the INA camp, training camp, be set up here. And unknown to a lot of people, actually there were up to 40 to 50,000 soldiers which were trained at this camp over a number of years, including the Rani Jhansi regiment, which is actually the first woman-only regiment in the whole world. That was done under Netaji. And the same day he comes back to back home. Day three. He addresses, he took up the whole auditorium in this historical university, Chulalongkorn University. A lot of you might have are probably students there. I know my two nephews sitting there are studying in the same university there. So you should go and visit when you go there. This is that historical place that this meeting took place. He spoke for 4 hours nonstop. And in that same, after this, as you can see, this full of the civilians as well as the military, the INA side of it. So INA is, just to go back a little bit in the history, INA was formed under IIL itself. Netaji just came and gave it a new name of Azad Hind Fauj to ignite that remembrance, the love for the motherland at that time. That same afternoon, he had lunch with German, Italian, and Japanese mission leads, and followed by a press conference, which was given, a joint press conference, which was done in Bangkok. And in the evening, the Thai foreign minister, Kun Vichit Thakan, hosted a dinner, an official dinner for Netaji. Going on. And day 4, he leaves for Rangoon.
So actually my presentation should have finished here, but I'm going to cheat a little bit if you don't mind, because there's two important things that I need to show to you. Second trip. So he goes only for 6 days. So within a week, he comes back to Thailand again. And on this trip, the second trip is important because he stayed here for more than 2 months. And he made a lot of meetings, a lot of alliances during this trip. For example, this is the meeting with Field Marshal Pibun Songkhram, who was the Prime Minister of Thailand at that time. And he's also meeting some of the military officers, making alliances of different kind. And I'm just going to fast forward. And this is, I promise you, this is the last thing that I'll show you. This is an important document which has just come to light. It's a Thai official document. And I just want to show you this one last slide. By the way, IAT had donated 500,000 baht at that time to the Thai government in order to enable and make it easy for the Indian Army, Indian National Army, to be located and based in Thailand. So this is that official document of the Thai government, telling it's for the Chulalongkorn University. So I'm just going to highlight what is written here, what has been marked there. So Shri Subhash Chandra Bose has been referred to as Nayok Rathamantri Rathaban Chua Krao Hang Azad Hind Rathaban India Chua Krao. Translated, he is the Prime Minister. Subhash Chandra Bose is the Prime Minister of the Provisional Government of Azad Hind, which is the official name which was there. Even within, it's not just a slogan, it's there in the official papers as well. And he is the Prime Minister of the Interim Government of India. So technically speaking, he is the first Prime Minister of India before anybody. So this is the reason I had to cheat a little bit and extend this beyond the first trip. Okay, Jai Hind, everybody. Thank you. थैंक यू रवि भैया, दैट वाज सो टचिंग, गूज़बम्स आते हैं. ऐसा कभी सोचा नहीं था इतने सालों में, 25 साल से यहाँ हूँ, पर जो फीलिंग आज आई ये देखकर, वो एक भावुकता की फीलिंग पहली बार, बहुत अच्छी भी है. मीठा सा दर्द कहते हैं जो, वो एक मीठा सा दर्द है. आगे बढ़ते हैं. कोविड के टाइम ने टेक्नोलॉजी को इतना स्ट्रॉन्ग कर दिया और हम सबको इतना ग्लोबली जोड़ दिया, और उसके साथ में थोड़े थोड़े से जो ये डिसएडवांटेजेस भी हो जाते हैं कभी कभी. तो हमारे साथ जुड़ने वाले थे मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया से, जो वो जुड़ नहीं पाए कोई कारणवश. मैं रिक्वेस्ट करूंगी महेश जी, अगर आप आके एक्सप्लेन कर दें थोड़ा सा, तो मेरे लिए काम आसान हो जाएगा. थैंक यू. नमस्ते. जैसे हम मिशन नेताजी का काम शुरू किए थे, उसी समय से हमारे साथ में ऑनलाइन कार्यक्रम में जोड़ने वाला एक मिनिस्टर थे, ऑनरेबल जनरल वीके सिंह जी, मिनिस्टर फॉर रोड ट्रांसपोर्ट्स एंड सिविल एविएशन. आज भी हमारे साथ में ऑनलाइन जोड़ करके कार्यक्रम उद्घाटन करने के लिए वो वादा किए थे. बट अनफॉर्चुनेटली भारत में प्रेसिडेंट इलेक्शन हुआ. जानता है जो आदरणीय द्रौपदी मुर्मू जी जो प्रेसिडेंट हुआ है, तो आज भारत सरकार का सभी मंत्री लोग आउटगोइंग प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद जी का उधर जाना है. सो दैट्स एन ऑफिशियल प्रोटोकॉल. तो इसी कारण वो इस समय में हमारे साथ में नहीं जोड़ पा रहा था.
तो आज 12-1 बजे उन्होंने ये विषय फोन कर बताते हुए उन्होंने बोला है आई विल सेंड यू ए वीडियो मैसेज, लेकिन वो टेक्निकली उसमें जैसे मुझे रिसीव करने के टाइम इट वाज ए 12-minute स्पीच, मुझे जो केवल इंट्रोडक्शन का 1 मिनट मुझे इधर मिल गया, 1 minute 31 सेकेंड। फिर भी जो है मैं चाहता हूं आई रिक्वेस्ट Chuanji to play that video, but that's only 1 minute 31 seconds. It's because of a technical error. Thank you. Gurmukh Singh Ji, patron Indian Association of Thailand, President of IAT Sudarshan Pal Singh Ji, before I say anything, I would like to pay my condolences to Gandhi. Always remember him for his contribution to the community. I came to know that the IAT was started in 1940s as an umbrella organization of the Indian diaspora inspired by Netaji Subhash Chandra Bose. During COVID times, they have sent oxygen cylinders to New Delhi and they've helped Indian community all around to ensure that necessary help when needed reach them. And it's a great thing that the pioneer families in Thailand have come together to form an organization, Mission Netaji, and INA Thailand and IAT has offered support to them. Mission Netaji and INA Thailand have planned a yatra in collaboration with various organizations from Bharat to October. As part of this yatra program, almost 1,000+ participants. मेरे ख्याल टेक्नोलॉजी के कारण वो इतना ही आया, तो आगे बढ़ते हैं। बहुत बहुत सौभाग्य है हमारा, ये भी मुझे आज पहली बार पता लग रहा है, और आई एम श्योर आप भी जो अतिथिगण यहाँ बैठे हैं उनमें से काफी जो है वो ये पहली बार ही सुनेंगे। तो बहुत बड़ा सौभाग्य है एंड थैंक्स टू टेक्नोलॉजी के हमारे साथ अभी जुड़ेंगे नेताजी के नेफ्यू मिस्टर चंद्र कुमार बोस। वो कुछ अपने महावाक्यों से लाभान्वित करेंगे, तो हम सब ध्यान से सुनेंगे। ही इज अ सोशियो पॉलिटिकल एक्टिविस्ट, द कन्वीनर फॉर द ओपन प्लेटफॉर्म फॉर नेताजी। वो उनके ग्रैंड नेफ्यू हैं। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगी पापनी जी से कि वो ऐसे सब समय पर रियलाइज होता है कि जूम और ये जो प्लेटफॉर्म्स मिले हैं पोस्ट कोविड एरा में, ये कितने अच्छे यूज में भी ला सकते हैं हम। Should I start? Yes, sir. Okay. Jai Hind to all fellow Indians living in Thailand, INA veterans who have fought the final battle for India's freedom. I address you in the expression that Netaji used to wish his fellow soldiers and officers, Jai Hind. Talking about Netaji Subhash Chandra Bose, his activities in Southeast Asia, particularly in Thailand, Malaysia, and Singapore.
we must try to understand the immense contribution that Bharatiyas living in Southeast Asia made to India's freedom struggle. The POWs and Indians, both men and women living in Southeast Asia, joined the Indian National Army, the Azad Hind Fauj, to fight for India's final freedom. Now, to understand the gigantic personality of Netaji Subhash Chandra Bose, who was not only the liberator of India, he was known as a beacon across Asia. We understand from documents that Netaji was addressed by Mamoru Shigemitsu, who was the foreign minister of Japan during the Second World War, and later on he became the deputy prime minister of Japan. He used to address Netaji Subhash Chandra Bose as the hero of Asia. Subhash Bose not only liberated his motherland, Bharat, but he inspired all nations in Southeast Asia who were fighting for freedom of their own nation. So a man who inspired revolutionaries, the revolutionary movement in India. See, the battle for India's freedom started way back in 1857 with the Sepoy uprising of Mangal Pandey. Then there were revolutionaries like Khudiram Bose, Binoy Badol Dinesh, Shahid Bhagat Singh, who did not hesitate to go to the gallows to sacrifice their lives for the freedom of their motherland. We also had Mahatma Gandhi's non-violent movement, which certainly had an impact on British imperialism. But today, documents have revealed, secret documents which have been declassified by the NDA government under the leadership of Narendra Modi ji in 2016, and certain documents which have been released by British archives clearly indicates that the final onslaught on British imperialism was none other than the battle of the Azad Hind Fauj, where Indians living in Thailand contributed, and then the subsequent IAT trials, which were held at the Red Fort in Delhi in early 1946, completely destroyed the loyalty and allegiance of the British forces to the British High Command. So it is amply clear that the British Indian Army, the British Navy, and the British Air Force completely revolted against the British High Command. Subhash Chandra Bose, when he was leading the Indian National Army as the supreme commander of the Azad Hind Fauj, knew very well that 60,000 soldiers cannot defeat British armed forces of 25 lakh strong. But he knew one thing. Out of 25 lakhs, only 40,000 were actually British soldiers and officers. The rest were all Bharatiyas. Netaji realized that the psychological impact on the Indian component of the British armed forces would revolt. When they will see that they are fighting against their own brothers and sisters, they would revolt against the British Empire. And that's exactly what happened. I would quote from a British historian who has very aptly described the impact of the INA. I quote from Michael Edwards from his book, The Last Days of British India. It slowly dawned upon the government of India
that the backbone of British rule, the Indian army, might no longer be trustworthy. The ghost of Subhash Bose, like Hamlet's father, walked the battlements of the Red Fort, and this suddenly amplified figure overawed the conferences that were to lead to independence. How nicely Michael Edwards has put it. Subhash Bose was not present in 1947, but way back in 1944, he had realized the impact of the INA would bring about freedom for India. What did Subhash Bose stood for? Netaji Subhash Chandra Bose was the first Prime Minister of undivided India. Netaji wanted united India's freedom. Netaji wanted Purna Swaraj. Even the entire Congress movement, Mahatma Gandhi, Deshbandhu Chittaranjan Das, Subhash Chandra Bose, my grandfather, Sarat Chandra Bose, all fought for Purna Swaraj of undivided India. But it is unfortunate that our country got divided on religious grounds. If Subhash Chandra Bose would have returned to India in 1947, India would not have been partitioned, and we would have not accepted dominion status. We were talking earlier about the first Prime Minister of India. Certainly, Netaji is the first Prime Minister of undivided India. Mr. Nehru is also a first. With due respects to Mr. Nehru was the first Prime Minister of divided dominion of India. I cannot change history. These are facts of history. So friends, today we are celebrating Subhash Chandra Bose's appearance way back in 1943 on Thailand soil. On the 25th of July, that historic occasion, Netaji Subhash Chandra Bose stepped onto the sacred soil of Thailand. He was sure that the people of Thailand, Bharatiyas living in Thailand, would support him. That famous 4-hour speech that he made to convince fellow citizens in Thailand that time has come. The call of the nation is to fight for India's freedom. Do you know, women, men, business people, they donated everything to the INA so that Subhash Bose and the INA can continue the battle for India's freedom. I have heard stories from Lakshmi Saigal, Captain Lakshmi Saigal, who was leading the Rani of Jhansi regiment. Again, one of the first army to have a women's battalion in the 1940s. You see, in India, we are very happy to state that it took so many years. Only recently, we have commissioned women officers in the Indian army. But Netaji Subhash Chandra Bose was certainly a man beyond his times. In the 40s, he had introduced Rani of Jhansi regiment so that women, along with men, could fight for India's freedom. He gave equal status to women in the 1940s. And no other army in the world gave equal status to women in 1940s. So we need to realize this man, what he stood for. Another thing that Subhash Chandra Bose did, he was the only leader, with due respects to all other leaders, all national icons. I must state, Subhash Bose was the only leader who could unite all communities as Bharatiyas. This is the relevance of Subhash Chandra Bose, according to me, in the 21st century. When we find divisive politics, we find religion being played into politics, we must recall and remember Subhash Chandra Bose. In Indian National Army, there were only Bharatiyas. There were no Hindus, there were no Muslims.
There were no Sikhs, there were no Christians, there were only Bharatiyas. They ate together, slept together, and fought together for the freedom of our nation. So friends, we need to realize Subhash Chandra Bose cannot be honored by making a museum in his name. Netaji Subhash Chandra Bose, his gigantic personality cannot be restricted to 4 walls of a museum. Subhash Chandra Bose cannot be honored by unveiling and erecting a statue of this leader. Subhash Chandra Bose can be honored by imbibing and following his ideology. Netaji wanted political, economic, and social freedom. We have achieved political freedom, but we are a far cry away from achieving Subhash Chandra Bose's economic and social freedom. We need to strive for economic and social freedom. His concept of social reconstruction, equality for all, he fought for an egalitarian society. So if we really want to honor Netaji Subhash Chandra Bose, we must build India that he had envisioned, an India where there are no poor, in India where illiteracy and disease are eradicated, an India where every person has the right to education. Then only we would be able to pay due respects to Subhash Chandra Bose on his 125th birth anniversary year. With these words, I'm very happy. I'm grateful to the Indian Association of giving me this opportunity to share a few thoughts with you. I would again come and address the gathering and share my thoughts about Subhash Chandra Bose and his relevance in 21st century India. Southeast Asian Indians would always be remembered for fighting the final battle for India's freedom. We are free today. Let us remain free. Let us think about the India that Netaji actually wanted. I am sure we would be able to achieve and build Netaji's India. Jai Hind, Namaskar. Sound नहीं. No वो sound. प्यार का सबूत हम उनके जैसा बनकर या उनकी जो आइडियोलॉजीज हैं, धरोहर है, उसको आगे बढ़ाकर सबूत दे सकते हैं उस प्यार का. So if we all love who we are here for today, in the times that are relevant today, let us all carry some quality that we would use in our life and change a little bit of history for our children and the generations to come to savor. इतिहास जो हम आज कर रहे हैं, उससे हम बना रहे हैं, जो हो चुका भले ही उसे हम बदल ना सकें. So thank you so much. आप सबके पेशेंस के लिए. अब और एक बहुत महानुभाव जिनको मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि वो भी आकर अपने कुछ महावाक्यों से लाभान्वित करें, वो हैं डॉक्टर तमिल सेल्वन. सो ही इज़ द कोऑर्डिनेटर ऑफ हम स्वदेशी. अगर मैं कुछ गलती करूं तो मुझे माफ़ करिएगा प्लीज़. अपने पढ़ाई के पश्चात इन्होंने प्रचार किया राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ में, RSS द्वारा, and he's associated with SEWA, Seva International, which is one of the biggest charitable organization. उसके बाद इन्होंने कुछ वर्ष बाद जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में as a professor join किया है. And he has identified all the INA veterans and also helped the families.
मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगी कि वो आएं और अपने माँ वाक्यों से लाभान्वित करें। Thank you, madam. Jai Hind and Namaste to all. Thanks for IAT for welcoming me for this launch of Mission Netaji and INA Thailand. So congratulations for the officials of means Indian Association of Thailand and Sri Mahesh ji and Dharam Singh Chawla ji and other our members like who is instrumental to design this project, Mission Netaji and INA Thailand, and all our Sangh Karyakarta people in Thailand who is like instrumental to design this project and to take it like a very innovative way. Like we know that now we are all listening like how much the INA and Netaji contribution from Thailand soil has been successful, and with the support of the Thailand government, because that is very important. The government of Thailand has that time means given so much of support to INA, being there like knowing the pressure like from the big giant like British imperialism, how the means they will get the means outside pressure they will get. Out of that also they supported Netaji and INA. They given so much of land to build the INA and their training camps and other things. So we have to thank to the Thailand government for that. So we should not forget the contribution from them. So now we are like doing in Bharat, we are collecting like various INA veteran families living in Bharat, and we used to take them and other like normal people also. To last 5 to 6 years we are doing yatra to Moirang as well as to Port Blair in Andaman to remembering the INA veterans families and their contributions. So in this connection, like Mr. Vijay Patel ji from Nuclear Science Center in New Delhi, so he is the instrumental for organizing this yatra to Moirang, Nagaland, and as well as to Andaman for the last 5 to 6 years. So we are thankful to Mr. Vijay Patel ji for organizing this for the last 6 years, and many people all over like India, like we have like almost we have collecting the INA veteran families living at present, and we are honoring them, and we are taking them to this INA memorials, and we used to honor them for last 5 to 6 years. So in this connection, like we were doing the Tamil diaspora in Southeast Asia for last 2 to 3 years with the inspiration of Sri Ravi Kumar ji. He is a Viswavibhag, he is a Pracharak, like he is known to many people in Sangh in Thailand and Southeast Asia also. He is the inspiration to many people, and his inspiration to collect the INA veteran families in Southeast Asian countries. So many people worked with him in Sangh as well as in different capacities. So he is instrumental for this collection of INA family veterans also. So now we thought that why don't we start some interaction between the Southeast Asian country, the contribution to INA with the Bharat, so that like Bharatiya people also should know how much like the Southeast Asian countries has contributed towards our freedom struggle. So in this connection, we have planned a yatra in October, like to mainly celebrate October 21st as Azad Hind Divas. So we have planned a yatra like about 100 people from Bharat all over the India. So we are going to collect about 100 people, and they are going to visit Thailand in October 15th they will be coming, and in October 16th there is a grand program going to be organized here. About 1,000 people like we are going to expect for that program with all the INA veteran family members, and we are going to give the honor to them. So the main objective is to honor the INA veteran family as well as INA contributors in terms of donors, in terms of land, money, because they have done. So they have contributed. So we have to recognize each and every one of the contributors to the INA one. So that's our objective. So for that, the 16th October, there will be a grand program in
Thailand. The same way we are the same team going again to Singapore, and 21st October in a grand program in Singapore, INA Memorial. There is a big memorial in Singapore. There it will be a grand program. Then 22nd October, there is a grand program in Kuala Lumpur, Malaysia. So this Yatra, like we have planned, with the support of the team, like we have formed the team. For Thailand, Sri Mahesh ji and Sri Taram Singh Chawla ji will be the coordinator for this program. And IAT is going to host that program on behalf of all the organizers. So we will thank IAT for accepting that our request and taking that project in a high spirit mode, and like taking that yatra and honor our INA veterans. Okay. So in this connection, we are going to also thank other coordinators in Singapore, Sri Vilvaji and Ramdaji, and also Gopio International Singapore. They have been the coordinator for Singapore Yatra, as well as for Malaysia, Sri Rajagupanji and Gopio International Malaysia. They are going to be the host for this Yatra. Same way like here we are doing, so they are going to be the same team, like they will be organizing that. So we thank to Rajagupanji and Gopio International Malaysia and Gopio International Singapore. Also we want to thank in this time. So in this connection, we are going to float a form to collect remaining, like any members, family members, each family member, we are going to have an online form. Like we developed an online form. Sri Mahesh ji and Taram Singh Chawla ji is going to coordinate that, and with the IAT support to collect the complete database of the INA veteran families. So that form will be distributed among all our communities. So we request all of us to fill that form, online form it will be, so that we should not miss any INA family or contributors to honor them. So that's what our effort now, like we have 2 to 3 months now to collect the complete database. So I will request you all to contribute in that online form. Okay. So in this connection, I want to thank our Sangh, Sri Umesh ji also, like for actively organizing, and other like our Pracharak ji and other Sangh coordinators in Thailand. So actively participating in this project and getting like our INA member families. So we will thank them for Umesh ji and other team in Thailand for this activity. So this is the main objective, is that what is the Netaji's role in Thailand, that should be known to the Bharat. So that is the main objective. Same way, like we are going to give some representation to Government of India on behalf of this entire family, so that like Government of India also have to actively like understand, and they have to also actively involve with our initiatives. So like now recently we will be knowing Government of India has installed a hologram in India Gate, as well as successfully they have designed a INA memorial in Red Fort. So that is the great things, like Government of India has taken the initiative towards Netaji, but it is not sufficient. We have to more contribute. Also like next Professor Kapil Kumar sir, he is the architect behind the designing of that INA memorial in Red Fort. So he is going to speak next to me. So thank for him also. He is going to visit Thailand also in few days, and he is going to collect more data about Netaji in Thailand roles. Okay. So now finally I want to thank IAT is actively like taken this all the initiatives and supporting us also in all the manners, and like whatever the record form to promote Netaji's visions and INA's vision. So IAT members like actively very involved, and like they are encouraging all other organizations also come together, and like there is no barrier in between us. We are all like from Indian, so we should not have any organizational barrier. So they are inviting all the organizations to come together and make this project more success. So that is like this is not limited to any particular organization. So this is open. We invite all the communities from Thailand as well as in Bharat to come together and make this project very success. So I wish all our
participants of the organization as well as the individuals who are all involved in this project to get great success. Namaste, Jai Hind. थैंक यू सो मच डॉक्टर सेल्वन। आगे बढ़ते हैं। हमारा सौभाग्य है कि आज हमारे साथ में INA के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, तो मैं 4 रिप्रेजेंटेटिव्स को रिक्वेस्ट करूंगी इन द ऑर्डर दैट आई टेक द नेम, वो आएँ और 2 मिनट में अपने कुछ महावाक्यों से आज की सभा को लाभान्वित करें। सबसे पहले मिस्टर राज सचदेव जी। Mr. Ashwin M. Kothim, coordinates the Consular of Embassy of India, Thailand. Honorable guests, ladies and gentlemen, INA family who are joining us today, Jai Hind. On behalf of Indian Association of Thailand, IAT, it is my great pleasure in welcoming all of you in this evening of the inauguration ceremony of commemorate the 80th anniversary of Netaji Subhash Chandra Bose first visit in Thailand in July 1942. I think on that time I was only 4 years over. Mission Netaji and INA Thailand is a project of the Indian Association of Thailand with the objective of honoring and projecting the contribution of the Indian community in Thailand toward the formation and function of Indian National Army or INA, as well as Netaji Subhash Chandra Bose. We wish to highlight the contribution of the Indian committee who assisted INA and played a key role for the freedom of India from the British rule. With my own experience, when I was 9 years old, I joined Balak Sena. With the leadership of Netaji Subhash Chandra Bose, I was assigned to address a Balak Sena uniform with Gandhi topi, together with my friend Tilak Raj Pawa, who is also Balak Sena on that time, and hand over the letter to the secret letter of requirement of the independent to the British General Army, who had meeting with all officers in Thailand at that time. It was the great memory in my life and still on my mind forever. We are hopeful that our event will provide you an insight the Netaji visit in Thailand and show some glimpses of the key role that some members of the Indian diaspora in Thailand played in supporting Netaji and the Indian freedom movement. Thanking you. Jai Hind. थैंक यू सर। अब मैं इनवाइट करूंगी मिस्टर तिलक राज पावा जी, वो आके अपने महावाक्य से लाभान्वित करेंगे। ही रिप्रेजेंट्स बाल सेना।
जय हिंद। आज हम नेताजी सुभाष चंद्र बोस सेलिब्रेटिंग 80th ईयर ऑफ नेताजी विजिट टू थाईलैंड, इनके बारे में हमारे ऑर्गेनाइजेशन के जितने भी मेंबर्स हैं मना रहे हैं, सेलिब्रेट कर रहे हैं। मैं बालक सेना में ज्वाइन किया था जब मेरी उम्र 8 साल के 9 साल की थी। आज मैं 85 ईयर्स ओल्ड हूँ। आप अंदाज़ा लगा दीजिए कि उस वक़्त मैं 8-9 ईयर्स का था। मुझे सिर्फ ये याद है कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस यहाँ आए थे। उन्होंने कुछ अरसे के बाद 4-5 साल के बाद बालक सेना फॉर्म किया, जिसके हमारे लीडर थे मास्टर करनैल सिंह, जो कि हेड मास्टर और सिख विद्यालय के थे, कृष्ण लाल माटा और बेन सिंह कुकरेजा। बालक सेना नेताजी सुभाष चंद्र, हाँ, उसके बाद मास्टर करनैल सिंह हमें चुलालंगोन यूनिवर्सिटी में से ले गए। वहाँ पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी आए, उन्होंने लेक्चर दिया 3-4 घंटे का। उस लेक्चर में हमारी इंडियन कम्युनिटी भी बहुत थी, जो मुझे याद है। हमारे इंडियन भाइयों ने और बहनों ने अपने तन मन धन से जो भी दान देना था नेताजी को दिया। मेरे ग्रैंडफादर ने मुझे बुलाया और मुझे एक लिफाफा दिया कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस को जाके दे के आओ स्टेज के ऊपर। मैं लिफाफा लेके गया, मुझे नहीं मालूम था कितना पैसे थे। जब नेताजी के पास मैं पहुंचा तो उनके साथ एक और जेंटलमैन थे जिनका नाम चैटर्जी था। तो मैंने लिफाफा जो ऐसा दिया तो उन्होंने मुझे उठा लिया। नेताजी सुभाष चंद्र बोस, नेताजी सुभाष चंद्र बोस के साथ मैं सोया हुआ भी हूँ। वो थाई भारत कल्चर लॉज में आया करते थे। थाई भारत कल्चर लॉज में एक दफ़ा बारिश हो गई बहुत ज़बरदस्त, नेताजी जा नहीं सके, तो हम भी अपने घर नहीं जा सके। तो वहाँ पे हम जब सोए थे, नेताजी भी वहाँ पे सोए थे। उनका कोई ठिकाना नहीं होता था, आज कहाँ है कल कहाँ है, आज कहाँ है कल कहाँ है। कभी कभी बैंकॉक में, कभी सिंगापुर में। सिंगापुर के अखबार में वहाँ पे नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी ने एट द फर्स्ट मिलिट्री रिव्यू ऑफ सिंगापुर एज द सुप्रीम कमांडर ऑफ द इंडियन नेशनल आर्मी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस said, India must be freed with the blood of her own sons and daughters. India must be freed with the aid of money and materials provided by the Indians alone. So, with the force of arms and the cost of your blood, you will have to win liberty. Then with India is free, you will have to organize the permanent army of free India, whose task it would be to preserve our liberty for all time. Netaji Subhash Chandra Bose का जब हवाई जहाज से एक्सीडेंट हुआ, जो मुझे याद है, मेरे ख्याल में नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी का जहाज़ ताइवान में ऑन इट्स वे टू इंडिया जा रहा था, गुजर गए। और कुछ अरसे के बाद हमारे इंडिया में जो कि सबसे बड़े सिंगर थे मोहम्मद रफ़ी, उन्होंने नेताजी सुभाष चंद्र बोस की अमर कहानी का रिकॉर्ड बनाया था। गांधी जी का भी बनाया था। ये मैं बात कर रहा हूँ वर्ल्ड वॉर सेकंड की।
आप लोग जो आज मना रहे हो, जितने भी ऑर्गेनाइजर्स हैं, वर्ल्ड वॉर सेकंड का एक्सपीरियंस आपके पास नहीं है। तिवारी शीतल साहब को है, वो मोहम्मद रफ़ी का रिकॉर्ड जो नेताजी की अमर कहानी थी, मैं अपने बड़े भाई को बोला इसको खरीद कर लाओ और हम सुनेंगे। वो लेके आए तो हमने अपने घर में ग्रामाफोन में रोज़ बार बार सुनते थे। वो अमर कहानी कुछ मुझे याद है, आपकी परमिशन से जो मुझे याद है मैं आपको थोड़ा सुनाता हूँ। नेताजी का जीवन था, नेताजी का जीवन था बलिदान की एक कहानी। बलिदान ही बलिदान था बचपन और जवानी। नेताजी का जीवन था बलिदान की एक कहानी, बलिदान ही बलिदान था बचपन और जवानी। माता पिता ने समझाया और इंग्लिस्तान को किया रवाना। माता पिता ने समझाया और इंग्लिस्तान को किया रवाना। मोहम्मद रफ़ी तो अपने राग में गाता था। माता पिता ने समझाया और इंग्लिस्तान को किया रवाना। बड़ों के आगे होंठ न खोले लेकिन बागी दिल ना माना। यूरोप में एक ऐसे इम्तिहान को पास किया, इतना ऊंचा ओहदा पाकर देशभक्त को छोड़ दिया। फिर क्या हुआ? हिंदुस्तान में आके पहले गांधी को प्रणाम किया, गांधी को प्रणाम किया। देश की सेवा जा बापू से पहला पहला कदम लिया, पहला पहला कदम लिया। भारत के दुख दर्द को समझा और पहचाना। जंग में आया आज़ादी का परवाना, आज़ादी का परवाना। क्या अंग्रेज़ों ने अब ऐद करे बागी को अब कैद कुचल डाले, मचल डाले। माता घर में इंतज़ार कर रही थी। माता हुई उम्मीद की लौट आएगा बेटा, माता से कहे बिना कहाँ जाएगा बेटा। एक आस में दरवाजे भी घर के न किए बंद, आ जाएगा, आ जाएगा वो लाल हो परदन। माँ इंतजार कर रही थी, मगर क्या हुआ? नेता समझते थे एक और भी माँ है, उस माँ से बड़ी माँ है जो हिंदुस्ता है। वो छोड़ गया माँ को, बड़ी माँ को छुड़ाने, एक हिंद की बिगड़ी हुई तकदीर बनाने। चला परदेश छोड़कर देश हमारा नेता, आज़ादी की नई लड़ाई लड़ने प्यारा नेता। हिंदुस्तान से काबुल में, फिर काबुल से बर्लिन में, चलते चलते पहुंच गया वो सिंगापुर के रन में। कौम की जो फौज और कौमी तिराना बन गया। जय हिंद जय सुभाष, जय गांधी जय सुभाष, जय हिंद जय हिंद जय हिंद। मुझे एक और बात याद है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी जब श्रीलंकन यूनिवर्सिटी में उन्होंने लेक्चर दिया, लेक्चर के बाद उन्होंने बोला जो आज तक मैं भूल नहीं सकता, आप मुझे खून दीजिए मैं आपको आज़ादी दूंगा, आप मुझे खून दीजिए मैं आपको आज़ादी दूंगा। जय हिंद। थैंक यू सो मच सर। गुस्ताखी माफ। एक रिक्वेस्ट है आप सबसे, ये जो वेटरन्स हैं ये आज आपके सामने हम सबके समक्ष जो हैं ये हमारी पूंजी हैं।
एंड अपने पिटारे में से ये जो कहानियाँ हमारे साथ अभी शेयर कर रहे हैं, वी आर फॉर्चुनेट दैट वी आर अलाइव ओवर हियर एंड लिसनिंग टू देम, because maybe in another decade we will not even have the real biopics who are going to speak these real stories. तो क्या मैं आप सबसे दरख्वास्त कर सकती हूँ, थोड़ा सा पेशेंस बनाए रखें और प्लीज़ साइलेंस मेंटेन करके जो वेटरन्स अपने जीवन की कहानी बता रहे हैं उसको ध्यान से सुनिए. आगे बढ़ते हैं. अब मैं इनवाइट करूंगी श्री सुदर्शन पाल सिंह जी को, वो आकर अपने महावाक्यों से लाभान्वित करेंगे. Yeah. Honorable ladies and gentlemen, it's a matter of great pride that we have got together here to remember the great patriot Subhash Chandra Bose, who was not only a great patriot but also a brave soldier for the Indian independence struggle. I'm not a veteran, but my father was the chairman of the Indian Independence League. And they have done some very honorable work for the independence of India. There's no doubt about it. But I have not come prepared here. I didn't know I was given 2 minutes. And I think I won't cross 2 minutes because I don't have any data with me. So, in behalf of my father and all other elders, I thank all the organizers, and I hope to gather some more information when we meet next in October. Thank you. Jai Hind. थैंक यू सो मच सर. आगे बुलाऊंगी श्री धर्म सिंह जी श्री चावला को, वो आके लाभान्वित करेंगे अपने महावाक्यों से. नमस्ते जी, जय हिंद. मेरे को ऑनर हुआ था. आई वॉज विथ प्राइम मिनिस्टर मोदी जी when the Museum of Subhash Chandra Bose was opened in 2019. I was there and met Modi ji and Kapil Kumar ji and Chikara Sahab. My father was with Netaji Subhash Chandra Bose along with my uncle Seth Gurbakh Singh ji. Subhash Chandra Bose came privately to my grandfather and asked, we need 2 members of your family to be with us. So my grandfather said, my eldest son and my 4th son will be with you always. And they were with Subhash Chandra Bose ji and till the end when Subhash ji went to India or Burma. So my grandfather said that we are with Subhash Chandra Bose. Sadhguru Pratap Singh ji came to Bangkok, our religion Sadhguru ji, asked my father about Subhash Chandra Bose and what was going on in Thailand. And Sadhguru Pratap Singh ji said that this जैसे हम कहते हैं ना रूह, ये रूह जो है ना, ये वही रूह है जो मलेरकोटले में सदगुरु राम सिंह जी के समय में शहीद हुए थे. उन्होंने कहा है मैं फिर जन्म लूँगा दुनिया में और हिंदुस्तान को आज़ाद करना है. So this great soul of unsung hero is the blessings from God Almighty to us. So I very glad that Mission Netaji Subhash Chandra Bose is celebrating 80th of Netaji coming to Thailand without the INA families.
this will not be success. So I thank INA families, members, IAT, and especially Mr. Mahesh Kumar, who first provide all the information in Thailand, who are the members of INA. He is the first one to write this history. So I thank you, Mr. Mahesh, IAT, Mission of Netaji Subhash, and तमिल सरवन जी बैठे हैं, बहुत मेहरबानी आप बता रहे हैं, कोटवानी साहब बैठे हैं, और विदाउट INA फैमिली सपोर्ट दिस विल नॉट बी सक्सेस. थैंक यू एंड जय हिंद. थैंक यू सो मच सर. आखिरी इस कड़ी में बोलने मैं श्री रवि भाटिया जी को, मेरे बड़े भाई से भी बढ़कर, उन्हें बुलाऊंगी. वो कुछ और इनसाइट्स डालेंगे. 2 मिनट से ज़्यादा. दो मिनट ये मुझे बोला गया है. अब 2 मिनट में क्या क्या बोला जाए, इतनी बड़ी हस्ती है ये. तो पहले मैं जब आया था आपके सामने, वो था एज अ स्टूडेंट ऑफ हिस्ट्री और सिर्फ कुछ नॉलेज शेयर करने के लिए. इस बार मैं आया हूँ क्योंकि मेरे ग्रेट ग्रैंडफादर जो INA में थे, उस IIL में वाइस चेयरमैन थे, लाल सिंह पांदी उनका पेन नेम था. ही वॉज अ राइटर एंड एन एकेडमिक. उन्होंने स्पीचेस भी लिखे हैं, और हम लोग यानी जो ग्रेट ग्रैंडफादर थे, he used to give logistical and financial support to the army. So since our family is from the north, it's very rare for Thai Indians to be anywhere outside of Bangkok, especially in the town that we are from. We are from Phra, which is in the north of Thailand, and there's only one Indian family, the Bhatia family, which is us. That's it. तो हमारा काम था, ये वो आए थे गुजरांवाला से, अनडिवाइडेड इंडिया की जो बात हो रही थी, गुजरांवाला से आए हैं क्योंकि उस टाइम पे ये आर्टिकल्स दिखते थे, एंटी ब्रिटिश आर्टिकल्स, फायरी आर्टिकल्स टू मोटिवेट पीपल टू फाइट एंड गेट अप एंड फाइट अगेंस्ट द ब्रिटिश पीपल. व्हाट आर यू डूइंग? तो उनके खिलाफ वारंट इशू हो गया, एंड ही escaped to Thailand, where our family already had some business presence. Where we finally settled down. As kids, we were always wondering कि Phra में क्यों गए थे यार, इतनी छोटी जगह, इतना वो तो बाद में जब हिस्टोरिकल चीज़ें पता चली कि वहाँ पे अंग्रेज़ों का पहुँचना बहुत मुश्किल था, और वहाँ से बैठे बैठे, since Phra is very close to Burma and has close relations with the Royal Army of Burma, it was easier to support, to infiltrate into India via Rangoon at that time. But ठीक है, it's a long history and I only have 2 minutes as I've been reminded again. तो अक्टूबर में जब हम मिलेंगे ना, बहुत सारी बातें करेंगे, ये आपको हम वादा करते हैं. आप मेरी तरफ से ऑलरेडी वादा कर चुके हैं. थैंक यू एक बार फिर से. जय हिंद सबके लिए. रवि भैया जब बोल रहे थे तो मुझे एक ख्याल आया, मुझे नहीं पता यहाँ बैठे बैठे कितने लोगों को वो ख्याल आया है. अगली मीटिंग हमको, आपको ऐसा नहीं लगता है फ्रे में भी करनी चाहिए सबको? आगे बढ़ते हैं. एक एड्रेस है बाय प्रोफेसर कपिल कुमार, वो स्क्रीन पे अभी प्ले होगा. आप सब अपना ध्यान वहाँ दीजिए प्लीज़. अभी हम ऑलमोस्ट प्रोग्राम के टेल एंड पर ही हैं, तो थोड़ा पेशेंस बनाए रखिएगा प्लीज़. My Jai Hind to all the family members of the brave warriors of Thailand, Indians, who sacrificed, who gave their lives, who gave their properties to Netaji, to Azad Hind Sarkar, to Azad Hind Fauj.
for the liberation of their motherland. I have mentioned many in my book, and it's a pleasure that Mission Netaji has been started in Thailand. All operations were carried out, and that's why 17th August also Netaji had flown to Bangkok. I congratulate you all for starting this great institution to remember Netaji and to celebrate 80th anniversary of Netaji coming to Bangkok, organizing the INA, organizing the Azad Hind Sarkar, which actually was initially founded in Thailand with Pritam Singh ji, Ishwar Singh ji, Raghunandan Sharma ji, many others, A.M. Sahis coming to Thailand and all these aspects. And we are trying to revive all these names which are removed from Indian history books. Today, the Indian youth also is learning about the contribution of the Indians in Thailand for liberating India. I wish you all best and hope that your mission will not stop here. I'm looking forward to see very soon a book on INA in Thailand. I'm looking forward to see a museum in Thailand of INA Netaji. It was a pleasure to see the photographs of the TSAT, of the seal, of the import, etc. used by Netaji in Ishwar Singh Ji's house. I think there are many such things over there. And from my side, any way I can contribute for establishing a museum, for writing the history of INA in Thailand, because I have a lot of documentation with me here and also in India also with me, which I have collected. It will be my pleasure. Jai Hind. थोड़ा सा माहौल बदलने का समय आ गया है। वाव। तो अभी जो हमारे बीच आएंगे वो बहुत ही प्यारे, यंग, वेरी वेरी डायनेमिक, हम्बल सिंगर लाइव गाएंगे हमारे लिए वो गाना जिससे हम सबकी रूह कहीं ना कहीं जुड़ी हुई है। तो मेरी दरख्वास्त है आप सबसे कि प्लीज़ साइलेंस मेंटेन रखिए और हमारे यंग बडिंग सिंगर निरंकार नरूला, आई एम सॉरी इतने सारे नाम हैं कि मैं कंफ्यूज ना हो जाऊं, इसलिए निरंकार नरूला को हम वेलकम करते हैं। ही इज़ अ वेरी यंग बडिंग स्टार। ये थाई इंडियन कंपटीशन में फाइनलिस्ट रह चुके हैं और जब ये प्रैक्टिस कर रहे थे तो मैं अंदर आई तो काफ़ी रूहानियत से गाते हैं। Hello, check. I would like to take this opportunity to first of all thank the Indian Association of Thailand, Mr. Raviji and Auntie Renu for giving me this opportunity to sing here. And I'll be performing the song Air Watan by Mohammad Rafiji from the movie Shaheed, and I hope everybody enjoys it. जलते भी गए, कहते भी गए, आजादी के परवाने, जीना तो उसी का जीना है, जो मरना वतन पे जाने।
ए वतन हमको तेरी कसम, तेरी राहों में जहाँ तक लुटा जाएंगे। ए वतन हमको तेरी कसम, तेरी राहों में जहाँ तक लुटा जाएंगे। फूल क्या चीज़ है तेरे कदमों पे हम भेंट अपने सिरों की चढ़ा जाएंगे। ए वतन हमको तेरी कसम, तेरी राहों में जहाँ तक लुटा जाएंगे। ए वतन। कोई पंजाब से, कोई महाराष्ट्र से, कोई यूपी से है, कोई बंगाल से, कोई पंजाब से, कोई महाराष्ट्र से, कोई यूपी से है, कोई बंगाल से। तेरी पूजा की थाली में लाए हैं हम, तेरी पूजा की थाली में लाए हैं हम, फूल हर रंग के आज हर डाल से। तेरी पूजा की थाली में लाए हैं हम, फूल हर रंग के आज हर डाल से। फूल हरे रंग के आज हरे डाल से। नाम कुछ भी सही पर लगन एक है, जोत से जोत दिल की जगा जाएंगे। ए वतन हमको तेरी कसम, तेरी राहों में जहाँ तक लुटा जाएंगे। फूल क्या चीज़ है तेरे कदमों पे हम भेंट अपने सिरों की चढ़ा जाएंगे। ए वतन। ए वतन हमको तेरी कसम, तेरी राहों में जहाँ तक लुटा जाएंगे। फूल क्या चीज़ है तेरे कदमों पे हम भेंट अपने सिरों की चढ़ा जाएंगे। ए वतन। थैंक यू वेरी मच। बहुत ही सुंदर निरंकार, आप बिल्कुल आपके नाम के खरे हो एकदम। So with this, we are nearly now coming to an end of today's wonderful evening. अब मैं इनवाइट करूंगी वोट ऑफ थैंक्स देने के लिए IAT के रिप्रेजेंटेटिव चीफ कोऑर्डिनेटर मिस्टर किति नवानी जी को। दम निकले इस देश की खातिर बस इतना अरमान है। दम निकले इस देश की खातिर बस इतना अरमान है। एक दिन इस राह में मरने का 100 जन्मों के समान है। देख के वीरों की कुर्बानी, देख के वीरों की कुर्बानी, हम अपना दिल भी बोला मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला। Jai Hind. You all have been earlier addressed formally by earlier speakers. Therefore, I will not take your time, and allow me to put you all in a single frame and address you, मेरे प्यारे भारतवासियों। क्रांति, आंदोलन, जय हिंद, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। आज़ादी तेरा जन्मदिन, आज़ादी तेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। जब ऐसे शब्दों आपके कानों में गूंजते हैं तो क्या आपके दिलो दिमाग में
आपके सोच में, आपके तस्वूर में कभी वो भ्रष्ट फूल वाले चाचे का नाम आता है? कतई नहीं। नहीं उस कपट्टी हिंदू विरोधी चरखे वाले बाबा का नाम आता है। आपके दिलो दिमाग में सिर्फ एक ही और एक नाम आता है, नेताजी, नेताजी, नेताजी। भले ही नेताजी की तस्वीर भारत की मुद्रा पे ना हो, लेकिन मेरे मित्रों, मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे मेहरबान मित्रों, जो व्यक्ति 80 वर्ष के बाद 1.25 करोड़ भारतवासियों के दिल की धड़कन हो चुका हो, क्या वो किसी कागज के टुकड़े की मूर्त का मोहताज हो सकता है? कतई नहीं। आज उस स्वतंत्र सेनानी, महानायक, सदियों में ऐसे लोग एक बार पैदा होते हैं। नेताजी की 80 वर्ष, भारत में आगमन के 80 वर्ष की हम समारोह आयोजन किया हुआ है, और मैं आपको यह पूछ रहा हूं, एक छोटा सा प्रश्न कर रहा हूं, अगर नेताजी ना होते तो आज आप इस खुली हवा में सांस ले सकते होते? कभी नहीं। 80 वर्ष पहले जब नेताजी अकेले निकले थे, उनका आगमन थाईलैंड के देश में हुआ था, तो वो एक आजाद हिंद फौज का निर्माण करने के लिए आए थे यहां। और मैं आपसे ये पूछ रहा हूं मेरे मित्रों, जिसका न राजा रजवाड़ा हो, न शासक हो, और वो 1 लाख की फौज जमा कर पाए, या ये कोई संभव है? किसी के लिए भी संभव है? अगर आप 20,000 वर्षों के इतिहास को देखेंगे, जहां तक मैं इतिहास पढ़ा हुआ हूं, तो 3 नेता ऐसे हो चुके हैं जो शासक नहीं थे, राजा रजवाड़े का कोई राजा नहीं थे, और उन्होंने एक विशाल फौज खड़ी कर देश को आजाद किया है, युद्धें की हुई है। पहला था श्री राम, जो एग्जाइल में था, और वानर, वनवासी, इन सब की फौज खड़ी कर विश्व का सबसे शक्तिशाली त्रिलोक विजेता रावण को उसी की धरती पे मात देने गया और विजय होके लौटा। और दूसरा जो मैंने इतिहास में पढ़ा है, 2357 वर्ष पहले कौटिल्य हुआ करता था, जिसने उस समय के सबसे शक्तिशाली राज्य मगध, उसके शासक नंद को उसी की दरबार में चैलेंज करके वो निकल आए थे कि मैं तेरा एक दिन ये शासन खलास कर दूंगा। और उसने रास्ते से एक आदमी को खड़ा किया। वो शासक थे, वो शिक्षक थे, शासक नहीं थे, सॉरी, वो शिक्षक थे, पढ़ाते थे, लोगों को पढ़ाते थे, आचार्य थे। और उसने एक मोर पालने वाले चंद्रगुप्त मौर्य को पूरे भारतवर्ष का शासक बना दिया। और तीसरा, हमारे नेताजी थे जो 130 वर्ष पहले पैदा हुए, और वो अकेले निकले थे। और कुछ इतिहासकार ये कहते हैं कि उनकी फौज 2.5 लाख की थी, लेकिन गूगल में जब मैंने देखा तो उसने बोला फाइटिंग फोर्स was only 85,000 और सपोर्टिंग फोर्स was 15,000। चलो हम मान लेते हैं उन इतिहासकारों की संख्या गलत है और गूगल का आंकड़ा सही है, तो भी इतनी बड़ी फौज खड़ी करना और अनपेड, आई रिपीट एंड एंडोर्स माय स्टेटमेंट, अनपेड। कोई विश्व का ऐसा कोई लीडर है जो 1 लाख की फौज जमा करे और उसको एक पैसा भी नहीं थे, सारे वॉलंटियर थे। वो अकेले जब निकले थे, अगर आपको ये जानना है तो आपको मेरे साथ 27 अप्रैल 19
1939 में कांग्रेस कार्यालय में चलना पड़ेगा मेरे साथ। आपने जीएम सैयद का नाम सुना होगा। जीएम सैयद और आचार्य कृपलानी सिंधी पक्ष रखते थे कांग्रेस कोर कमेटी में। आचार्य कृपलानी तो महासचिव भी थे कांग्रेस कमेटी के। जीएम सैयद मुसलमान थे और वो मुसलमान पक्ष रखते थे। वो एक सिंधी में डायरी मेंटेन करते थे और वो डायरी सार्वजनिक है, आप उसके वेबसाइट में पढ़ सकते हैं इस डायरी को। मेरा एक एक शब्द पढ़ सकते हैं जो मैं बोल रहा हूं। और वो डायरी में अपना पेज नंबर, डेट, टाइम, वेन्यू ये सब लिखते थे। उसने पेज नंबर 52 में जो लिखा है मैं वो रेफर कर रहा हूं। उसने बोला नेताजी करीबन 11 बजे थे सुबह के, बहुत क्रोधित थे और नेताजी अध्यक्ष थे कांग्रेस के। और गांधी पहली बार 30 मिनट लेट पहुंचे। और वो आगे ये कहते हैं कि नेताजी कभी भी गांधी जी से अश्लील भाषा में या अश्लील शब्दों में कभी भी उन्होंने प्रयोग नहीं किया। वो पहली बार था जब नेताजी ने बाएं ऐसे करके उनको डर्टी लुक कर दिए के बोला अगर यही अनुशासन हुआ तो हो गया मेरा भारत आजाद। जिगर चाहिए ऐसे शब्द बोलने के लिए। वर्ल्ड वॉर शुरू हो गई थी, आप सबको मालूम है। नेताजी ने गांधी जी को और कांग्रेस की सारी कोर कमेटी को बहुत कन्विंस करने की कोशिश की। अहिंसा बहुत हो गई, अब फरंगियों को सबक सिखाने का समय आ गया है। इसलिए आप मेरे साथ आइए, ये अहिंसा का पाठ छोड़िए और हम अपनी फौज खड़ी करेंगे और अंग्रेजों से हम युद्ध करेंगे और भारत को आजाद करेंगे, हर कीमत पे आजाद करेंगे। गांधी जी अपने जिद पे अड़े हुए थे और गांधी जी की लोग इज्जत करते थे, सारी कोर कमेटी उनकी इज्जत करती थी, इसलिए वो विवश हो गए। तो उन्होंने नेताजी ने बोला ऐसे करो हम वोट ले लेते हैं कमेटी से। तो नेताजी ने बोला जो मेरे साथ सहमत है वो अपना हाथ ऊपर करे। तो केवल 2 हाथ ऊपर आए, एक आचार्य कृपलानी का, एक सरदार पटेल का। तो फिर दोबारा उसने पूछा जो गांधी जी से सहमत है वो अपने हाथ ऊपर करे। तो एक भी हाथ ऊपर नहीं आया, मतलब दे वर न्यूट्रल इन अदर वर्ड्स। जब नेताजी ने देखा कि मेरा कोई साथ नहीं दे रहा है तो उन्होंने नाराज होकर गांधी जी को बोला मैं त्याग पत्र दे रहा हूं अध्यक्षा से और मैं कांग्रेस छोड़ रहा हूं। तो नेताजी ने उनको समझाने की बहुत प्रयास किया। सुभाष, वो हम उम्र थे तो उसको पहले नाम से बुलाते थे, बोला सुभाष ये डायरी में लिखा हुआ है, मैं अपनी मनगढ़ंत बात नहीं बता रहा हूं आपको, आप रेफर कर सकते हैं वेबसाइट में जाके। तो उन्होंने बोला सुभाष तुम अकेले क्या कर पाओगे, कांग्रेस से तेरी पहचान है, कांग्रेस में रहो, मत छोड़ के जाओ कांग्रेस को। तो नेताजी ने एक बहुत प्यारी बात कही जो जीएम सैयद ने लिखी हुई है, एंड लेट मी कोट। इससे गांधी मियां जिनको अकेले चलने का हुनर आता हो, काफले खुद ब खुद बेताबी से उसके पीछे चलते हैं, और वो ऐसे ही हुआ। जब उन्होंने भाषण देकर वो जा रहे थे, आचार्य कृपलानी उठकर बोले इंग्लिश में उनको, सुभाष आई एम विथ यू, आई एक्सेप्ट यू एज माई लीडर, आई विल फॉलो यू, लेट्स गो टुगेदर। तो जीएम सैयद बोलते हैं मैंने उनको कस के पकड़ा और बोला तुम सिंध को यतीम करके नहीं जा सकते हो। कृपलानी का नाम असल में जीवतराम भगवान दास कृपलानी था, लेकिन आचार्य कृपलानी के नाम से मशहूर था क्योंकि बनारस यूनिवर्सिटी में बिहार यूनिवर्सिटी में वो पढ़ाते थे, इसलिए उसको आचार्य कहते थे लोग। उसकी बीबी बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में पढ़ाती थी, सुचित्रा नाम था,
और यूपी की पहली चीफ मिनिस्टर बनी थी, लेडी चीफ मिनिस्टर। तो नेताजी ने जो उसको जवाब दिया आचार्य कृपलानी को, आई कोट अगेन एज पर द GM says डायरी, he said, don't follow me, I'm not going to lead you. फिर उंगली की गांधी की तरफ बोला, don't try to lead me because I'm not going to follow you. Then कोर कमेटी के ऊपर देख के बोला, if you are hand in hand, step to step, heart to heart, shoulder to shoulder, I will walk with you. This was Netaji Subhash Chandra Bose. उसके बाद वो अकेले निकल पड़े, काबुल गए, काबुल से रशिया गए, रशिया से वियना गए, वियना से जर्मनी पहुंचे, जर्मनी से सिंगापुर आए, सिंगापुर से थाईलैंड पहुंचे। ये सब इतिहास आपको तो भली बात ही परिचित हो इस इतिहास से। जब वो हिटलर के पास पहुंचे तो हिटलर ने उनको सहयोग देने के लिए कबूल किया कि हम आपका पूरा सहयोग करेंगे, आप करिए, लेकिन आप सोल्जर कहां से लाएंगे? Where are you going to get the army to fight with such a huge British government? तो उन्होंने बोला, आपके पास जो इंडियन प्रिजनर्स ऑफ वॉर है, मेरे आंकड़े बताते हैं वो 18,000 लोग हैं जो आपने युद्ध बंदी रखे हुए हैं बर्लिन में, मैं उनसे मिलना चाहता हूं। तो उनके साथ एक आबिद हसन होता था, मुसलमान था, वो उनके साथ गए और उन्होंने इंस्पायर किया, इंस्टिगेट किया और वो उनको आने के लिए तैयार हो गए। बोला, आपको मरना तो आज भी है, कल भी है, आप युद्धबंदी हो, क्यों ना अपने देश के लिए मरो। और वो कन्विंस हो गए और उनके साथ चलने गए। वहां एक सरदार सुरेंद्र सिंह थे उस प्रिजनर्स ऑफ वॉर में। उसने पहली बार बोला, नेताजी असी तुहाडे साथ है, तू साडा नेता हो। और नेताजी को फर्स्ट टाइम एवर एनीबडी एड्रेस एज अ नेताजी was Sardar Surendra Singh. And then Abid Hassan, he told him, because he was so successful, and Abid Hassan accompanied him through the submarine to Japan, you all know this. Abid Hassan ने नेताजी को बोला, जय हिंद। तो नेताजी ने बोला, क्या बोला तुमने? तो वो डर गए, उसने समझा कोई मैंने गलत बात कर दी। बोलता है, नो, आई वांट यू टू रिपीट अगेन। तो बड़ी सी धीमी सी आवाज में उसने बोला, जय हिंद। He said, that's going to be our slogan. That's going to be our slogan. ये नेताजी की जो देन है, that was coined by the Abid Hassan, not by नेताजी। नेताजी की देन है। और आज जब एक पुलिस वाला दूसरे पुलिस वाले से मिलता है, एक आर्म्ड फोर्सेस का दूसरे आर्म्ड फोर्सेस ऑफिसर मिलता है, तो जय हिंद करके संबोधित करता है एक दूसरे को, नमस्कार नहीं करता है, सत श्री अकाल नहीं करता है, सलाम वालेकुम नहीं करता है, जय हिंद करके मिलता है। ये था नेताजी का तेज। मैं I'll come back to my duty, which is a vote of thanks now. So allow me, please. And thank you for bearing with me. This narration was very, very important. No need. I'm okay. हमारे सौभाग्य है कि भारत से हमारे विशेष अतिथि आए हुए हैं यहाँ, प्रोफेसर डॉक्टर तामिल सेल्वान जी। मैं चाहता हूँ कि आप उसके
सम्मान के लिए एक जोरदार तालियों का दौर हो जाए। और साथ साथ हम आपके अति कृतज्ञ हैं कि आपने इंडियन एसोसिएशन ऑफ थाईलैंड को ये जो मौका दिया है कि और आपका विश्वास, हमारे ऊपर विश्वास है कि पूरे थाईलैंड में इंडियन एसोसिएशन के अलावा ये कार्य कोई भी नहीं कर सकता। इसलिए हम आपकी बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं और आपको विश्वास दिलाते हैं कि हम आपके विश्वास पे खड़े उतरेंगे। और जो अनफॉर्चुनेटली एक और प्रोफेसर साहब आने वाले थे, लेकिन एयरपोर्ट से उनको वापस भेजा गया क्योंकि AT के टेस्ट में वो पॉजिटिव हो गए थे। तो आई एम वेरी सॉरी टू हेयर दैट, अदरवाइज ही इज ऑल्सो वन ऑफ द आवर honored guest. हम स्वदेशी मंच का भी आभार प्रकट करते हैं। स्वदेशी मंच दिल्ली, उसका भी आभार प्रकट करते हैं जिन्होंने ये सारी व्यवस्थाएं की हमारी मंत्री के साथ और उससे पहले वो MP के साथ की थी। उसके लिए हम उसका आभार व्यक्त करते हैं। मित्रों, अगर ये सब कुछ होता है, आजाद हिंद फौज भी बन जाती, आप सबका सहयोग भी रहता और नेताजी सफल भी हो जाते, अगर थाईलैंड के नरेश, थाईलैंड की सरकार और थाईलैंड की प्रजा आपको सहयोग न देती, तो आप सोच सकते हो क्या ये पॉसिबल था, ये मुमकिन था कि नेताजी इतनी बड़ी फौज जमा कर पाए और सेतु बनाए और सेतु से फिर बर्मा जाए और बर्मा से फिर भारत जा पाए? क्या ये पॉसिबल था, मुमकिन था? कतई नहीं। इसलिए मैं थाई देश के नरेश का, उनकी सरकार का, उस दौर के प्रधानमंत्री जनरल फील्ड मार्शल फिबुन सोंगराम का अति आभार व्यक्त करता हूं। और हम सब सारे भारतवासी, न सिर्फ थाईलैंड के भारतवासी पर भारत के भारतवासी भी उनके ऋणी रहेंगे हमेशा। अगर वो, आप सोचो 2 मिनट के लिए, नरेश ने कितना बड़ा पंगा ले लिया एक ऐसे शासक से जो 70 कंट्रियों पे, 70 मुल्कों पे राज कर रहे थे। ब्रिटेन उस जमाने में 70 मुल्कों पे राज कर रही थी और उन्होंने पंगा ले लिया, उनके खिलाफ यहां अनुमति दे दी ट्रेनिंग सेंटर बनाने के लिए। ये कोई कम मदद नहीं हुई, कम उनका योगदान नहीं रहा, बहुत बड़ा योगदान रहा। इसलिए थाई देश के नरेश के लिए, थाई देश की प्रजा के लिए, थाई देश के सरकार के लिए एक जोरदार ताली हो जाए। हमने लक्ष्मीबाई को नहीं देखा, हमने भगत सिंह को नहीं देखा, तिलक को नहीं देखा, हमने राजगुरु को नहीं देखा, सुखदेव को नहीं देखा। लेकिन आज जो आए ने पूर्वजों के वंशज यहां उपस्थित है, मेरा उनको शत शत प्रणाम। अगर आपके पूर्वज न होते तो नेताजी ये फौज भी खड़ी नहीं कर पाते। इसलिए आपका भी बहुत बड़ा योगदान है। आप सबको मेरा शत शत प्रणाम। मित्रों, एक ऐसा व्यक्ति, शांत सुबह, साइलेंट बिलियनर,
समाज सेवक, हमारे इंडियन एसोसिएशन के संघ रक्षक, और इतनी सेवा की है उन्होंने समाज की जिसका कोई मुकाबला तक नहीं है। उस व्यक्ति ने, जब इंडियन एसोसिएशन ऑफ थाईलैंड डॉर्मेंट स्टेज में चली गई थी, मुरझा गई थी, लेकिन उसने मरने नहीं दिया। मुरझा गई थी करीबन 50 साल, क्योंकि आते आते 60s, लेट 60s में वो जो उनके फाउंडर मेंबर्स थे वो सब गुजर गए, और हमारा मेन मकसद जो था, जो प्राइम ऑब्जेक्टिव था, जो एजेंडा था, दैट वाज ओनली सिंगल एजेंडा, टू फ्री इंडिया। उसी के लिए इसका गठन हुआ। इंडियन एसोसिएशन ऑफ थाईलैंड का गठन इसीलिए हुआ, और जब वो टारगेट अचीव हुआ और वो लोग गुजर गए तो वो डॉर्मेंट स्टेज में चली गई, मुरझा गई थी। लेकिन एक व्यक्ति ने 50 वर्ष तक हर साल टैक्स फाइल रिटर्न किया, मिनिमम टैक्स भरे, ऑडिटर रिपोर्ट दिया, क्योंकि उसको वो जो मुरझाने दिया लेकिन मरने नहीं दिया, उसका मृत्यु होने नहीं दिया। इस ऐसा व्यक्ति जिसकी हम सब ऋणी है। अगर ये सब कुछ होता, सब कुछ होता, अगर वो व्यक्ति ना होते तो आप सोच सकते हो ये समारोह आप कर पाते? क्योंकि इंडियन एसोसिएशन ही नहीं होता मेरे भाई। तो इसलिए मैं आपको निवेदन करूंगा, खड़े होकर उस व्यक्ति का आप जोरदार तालियों से स्वागत करें और उनको अप्रिशिएट करें, उनकी ग्रेटिट्यूड फील करें। सरदार गुरमुख सिंह सचदेव, आप बैठिए। ये आपके शान में, आपके योगदान के लिए, आपके बलिदान के लिए हम सब ऋणी हैं। मैं अपनी वाणी को विराम देने से पहले, इट विल बी वेरी इनजस्टिस if I do not thank and mention the great contribution of a very beautiful couple who are made for each other, who has in this particular event, जिन्होंने बहुत बारीकी से हर चीज की मदद की है, वो है हमारे रवि जी और रेणु जी। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि इनके शान में भी एक तालियों का दौर हो जाए। हम भारत सरकार के भी अति कृतज्ञ है, यहाँ राजदूतालय के भी अति कृतज्ञ है, क्योंकि उन्होंने बहुत मदद की है इंडियन एसोसिएशन की। हर वक्त वो हमारे साथ खड़े हुए हैं, और पूर्व एम्बेसडर सारे चारों एम्बेसडर, हमारे अंकल जी हमारे साथ थे जब हम लोग गए थे, और उन्होंने जी जान से मदद की हमारी, और बोला इसको दोबारा आप जीवित कीजिए, हम आपके साथ है, भारत सरकार आपके साथ है, फॉर द इंडियन एम्बेसी। I like to thank a young, beautiful, sweet Neelu Day, who has conducted the program so well, and उसकी वाणी इतनी मीठी है। आप अपनी शक्ल तो दिखाइए नीलू जी। And I like to thank Indo-Thai News, Masala Magazine, who have come to cover our event. And साथ I like to thank नामधारी संगत, जिन्होंने पिछले 8 वर्षों से हर दम, हर पल हमें ये वेन्यू यूज करने के लिए दिया। और मित्रों, we do not pay anything. On the top, they provide us food. ये भोजन भी फ्री में हमको देते हैं। न केवल इतना, इंडिया था स्पोर्ट्स डे में करीबन 3000 लोग जमा होते हैं। आप सब उसके आई विटनेस है, आप आई विटनेस है, बहुत सारे लोग आप में से आते हैं। वहां 3000 लोगों के
3,000 लोगों के भोजन की व्यवस्था करते हैं, ब्रेकफास्ट की व्यवस्था करते हैं, शाम को चाय पकौड़े की व्यवस्था करते हैं 3,000 लोगों के लिए। इनके लिए हम आभार प्रकट करते हैं, उनके कमेटी का आभार प्रकट करते हैं और सारी संगत का हम अति करते गए हैं। इस शब्दों से मैं आई लाइक टू रिटर्न माय कंट्रोल टू द यंग लेडी हियर एंड थैंक यू। जय हिंद वंस अगेन। Thank you so much, Kiti sir. That was really powerful. So with this, we come आखिरी पड़ाव पर। मैं सबसे निवेदन करूंगी कि आप अपने अपने स्थान पर खड़े रहिए। हम INA का नेशनल एंथम प्ले करेंगे। बहुत रिस्पेक्ट के साथ, बहुत स्नेह के साथ और रूह को फील करते हुए हम सब आंख बंद करके विथ फुल रिस्पेक्ट खड़े रहेंगे। Total silence, please. सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा चंचल सागर विंध्य हिमालय नीला यमुना गंगा तेरे नित्य गुण गाए तुझसे जीवन पाए सब तन पाए आशा सूरज बन कर जग पर चमके भारत नाम सुभागा। जय हो जय हो जय हो जय 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 हो। थैंक यू एवरीवन। इसी के साथ जो आज शाम की सबसे मोस्ट अवेटेड मोमेंट और वो है पेट पूजा, उसके लिए सब प्रस्थान कर सकते हैं। पीछे द डिनर इज़ लेड आउट फॉर एवरीवन। एक रिक्वेस्ट है, डॉक्टर सिल्वन कुछ गिफ्ट्स, बहुत स्पेशल गिफ्ट्स लेकर आए हैं हमारी INA फैमिली के लिए। सो INA फैमिली रिप्रेजेंटेटिव्स के लिए थोड़ा सा निवेदन है कि आप यहीं पे 1-2 मिनट के लिए रुकें, लेकिन बाकी के सब प्रस्थान कर सकते हैं। हैव अ वंडरफुल रेस्ट ऑफ द इवनिंग एवरीवन। थैंक यू और जय हिंद।